And they have come out with the new education policy 2020, which is totally taking care of it. Thank you. And I assure you that within 3 days आपका केस बैंक में गया होगा. I wish you all the best, और मुझे उम्मीद है कि आज आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ आके आप कुछ न कुछ अपने साथ ले जाएंगे. मैं दोबारा ये है ना, ये पोल्ट्री के यूनिट्स बड़ा इसमें काम है. ये इको गार्ड पेपर नैपकिन, शायद ये आपका यूनिट है ना. किसी ने 2 कमरे लगाए, किसी ने 3 कमरे लगाए. You taken the first step. You are on this path. I wish you all well. ये चार्म क्या होता है? Every time you have to take risk. ये जूझना होता है. इसमें आपको हालात के साथ जूझना होता है. Then where is the problem? Where is the lacuna? The lacuna lies in awareness, as we could see. There is an acute lacuna in awareness. We do not know what entrepreneurship is. Ever since when I was a kid, like most of you, I'm from a middle class family. When I was a kid in my school, the only thing that our parents will tell us is कि आपको बड़े होकर क्या बनना है? अफसर बनना है. This is I, Anika Nazir, Women's Wing President, Save Youth, Save Future. We, the Save Youth, Save Future, warmly greet you all in this first of its kind conclave, the Kashmir Entrepreneurship Conclave, to create a single window, know-how system of acquiring entrepreneurship, awareness, and managerial skills. In this earnest endeavor, we wholeheartedly welcome Mission Youth, Khadi Village Industries Board, Kashmir Chamber of Commerce Industry, Confederation of Indian Industry, Kamal Foods, Central University of Kashmir, and most importantly, the youth of Kashmir present here from Kashmir. خصوصی Mr. Amin Sahab, Kamal Foods کے MD, اور اس NGO جو ہے سیو یوتھ سیو فیوچر کے جو آرگنائزرز ہیں، اور یہاں پہ آج تشریف لائے ہوئے گورنمنٹ آفیسرز، اور یہاں پہ بہت دل خوش ہوا کہ یہاں پہ بہت ساری ہماری بچیاں، بہنیں اور یوتھ انٹرپرینورز آئے ہیں. میں سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی طرف سے سلام. پرسنل مینجمنٹ کی بات کر سکتے ہیں. آپ کسی کو اپرچونٹی کو انالیسس، پروبیبلٹی، سمپلیکس میتھڈ، باقی چیزیں یہ سب سکھا سکتے ہیں. جو ہمارے یونٹ سے باقی جو ہماری میں نے بتایا ہماری 2 اسکیمز ہیں، پرائم منسٹرس امپلائمنٹ جنرل اسکیم کی کام ہی دیا نا ٹائم انہوں نے 10 منٹ ہی. تو اب میں نے 10 منٹ کے 10 منٹ اور لیے، اور بھی 2-4 منٹ لے لوں گا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ہمارے جو ہیں تو جسٹ 2-3 منٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ گو تھرو کہ ہماری یونٹس جو ہے نا اس میں بعد میں ہوں گے یونٹس، وہ جسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک دیم تھرو اے ویژول سیشن کہ کس طرح کے یونٹس، تاکہ یہ ہماری بچیاں یا ہمارے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ بھائی آئے ہیں، بیٹے آئے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ کس طرح کے یونٹس. چلیے لاسٹ پہ جائیے. ہاں یہ دیکھیے اس طرح کے یونٹس ہے ہمارا ہے نا. ریسٹورانٹس ہے، یہ جس طرح کے ہمارے یونٹس ہے، مطلب یہ جو ہم ماربل پہ لکھتے ہیں یا ولو وکر آئٹمس کرتے ہیں. نیکسٹ کر دیجیے. یہ ہمارا ایک زبردست اس کا ڈیمانڈ ہے ڈیری فارمز کا. بہت سارے ڈیری فارمز اب ہمارے تھرو اسٹیبلش ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے ڈائگنوسٹک لیبارٹریز ہے نا، یہ سروس اسٹیشنز، گاڑیاں دھونا. کیونکہ کبھی کبھار کیا کہتے ہیں جب ہم کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کہتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے جو زچ پالا والا کیا تھا. موسٹ آف دا پیپل تھنک لائک دس. کہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لاسٹ 3 سال میں ہم نے 17,266 یونٹس کو اسٹیبلش کرایا ہے. اور اس میں ہمارے یہاں پہ 4-5 یہاں پہ یہ محسن صاحب ہیں، میڈم 1-2 ہیں ہمارے پاس، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. جسٹ مشتاز کھروارے آپ کو لگے کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے لائے ہیں. تو 17,266 یونٹوں کو ہم نے 390 کروڑ کی مارجن منی دی ہے، اور جس میں 1,33,000 لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی. The organizers for inviting me over, and especially thankful to Wajahat Saab for speaking over to me and just making me a part of this event. I am extremely and profusely thankful. And looking at the gathering, it's a mix of our youth, and we are having with us the industry people, and what better a space than to speak. Very good afternoon to all of you, and assalamu alaikum. Well, I'm going to speak small because I have been waiting since morning.
I had slated everything in the afternoon in the university, because you are seeing nowadays we are having the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and a number of things are lined up for the activities in our university. And I am having to attend a very, very important meeting at 3 o'clock. That's the reasons I will not be able to just spare much time with you. However, I am going to just simply say some lines about the New Education Policy 2020 and the skill development. When we are talking about this, you know, this connects us to the present scenario. This connects us to the present event. Well, I say that, you know, whenever we are talking about the skills, these skills, they have been there ever since. We required always skilled people. If you start your day since morning and end up at the evening or the night, you will say during the days you will come across with n number of requirements where skilled manpower is required, skilled person is required. But this had never been thought that this could be integrated. You know, our youth, they were given much less importance as far as the curricular development is concerned, as far as their curricular and pedagogy is concerned. Institutions of higher learning, school education, college education, universities, they never thought of integrating this vocational education with the general education. The reasons were probably, these were the reasons that why we are having very limited number of the people who were the takers for this skill education or the vocational education. We can now imagine and reimagine the involvement of the vocational education. The education policy is talking a lot about the integration of this vocational education in the general education. And it cannot happen unless and until we do not have properly trained teachers to impart the trainings, and unless and until we do not have integrations with them who are in the first row, that the integration with the industry, collaborations with the industries, collaborations with the skill institutions, like ITIs are there, like engineering colleges are there. You know, we are talking about the multidisciplinary education and talking about a lot. It can happen at small places. In this context, we have a young entrepreneur here, Mr. Anas. If he can come and tell us about his venture. Come, Anas. Let me start with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right, so I had this opportunity to present this site here, and I am really happy that I have gotten this opportunity. Thanks to these guys here. So we are currently working on a website, namely pinity.com, and I just wanted to give a brief here on what this site is about and what can it do. Right, so here is the content on this slide, that it is like, what is pinity.com first, and why are we working on it, what would it do, and the second, we will check the features of this site, and also, last but certainly not the least, but what are we lacking behind it? You know, what are the fields in which we need some help? So please, the next slide. Yes, so pinity.com is basically an edtech website which is mainly focusing on providing students with easy access to education, and that also in a very interactive way. You know, this is a one-of-a-kind website, because I will tell you, there are a lot of edtech firms in this country, but this is the only site, this is currently under development, but this is the only site that will have impeccably everything that a student can, you know, think of, that he or she might need. Please, next. Yes, so why pinity.com, and what makes us different from all the other leading edtech firms? You know, there is the thing of
crash courses. By seeing the fast pace and effective pace of today's students, we have had this thought that we should provide the students with the education of their speed. Kyunki jo abhi tak wo halka slow paced education hai, that just doesn't work for nowadays, right? So we have added crash courses, or wo bhi we have research about this. We can provide JEE full course in under 500 rupees. Full course of JEE. It is 500 plus hours of content, 500 plus hours of study in under 500 rupees. Okay, so now let's get on to the features. So next slide, please. Next. Yes, so firstly, let's talk a brief about the crash courses. Right, so these crash courses are basically on an online platform, and क्योंकि मैं खुद तो नहीं बना सकता ये obviously, so we are going to tie up with several local coaching institutes ताकि कश्मीर का जो अपना हमारा education sector है वो भी upliftment हो, ठीक है? Those coaching institutes will tie up with us, and we will give them, as you can see here, they will firstly have an online presence through us. Secondly, they will be getting marketing through us, and third but certainly not the least, they will also be getting 60% of the revenue, of the whole revenue that will be obtained from their course, that will be on our site. Next slide, please. Now we have Pinety Broadcast. We have searched tirelessly. Our whole team has searched very tirelessly, and we have found out that, what is the major downfall of these edtech firms? It's actually the overspending on marketing. They want every student to know about their sites, but in doing that, they are wasting a lot of their funds. Right, so that's why they are failing. But now we have, tackled a way through that. In Pinety, we have a page known as Pinety Broadcast, in which we will have, several news-related queries regarding the latest educational fields. And through that, it will generate, automatic traffic on our site, which will be kind of a free marketing, you can say. शॉल्स का यूनिट चल रहा है और मेरा बुटीक का जो काम चल रहा है. तो जब मैं पहली खादी विलेज बोर्ड में गई तो मुझे भी एक अजीब सा लगा, क्योंकि जब किसी ऑफिस में पहली बार जाते हैं तो एक लड़की एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई टीज़ करेगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा. तो आप ऑफिस में जब जाएंगे आप अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए ऑफिस में जाने से पहले कि मुझे कुछ करना है. तब जाके आप घर से निकलिए, घर में ये सोच रखिए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस फील्ड में जाना है. मुझे लड़की बन के नहीं, मुझे एक एज अ एंटरप्रेन्योर बन के काम करना है. नहीं, मैं ना लड़की हूँ ना मैं लड़का हूँ. थैंक यू. तो अगर आप इस सोच के साथ घर से निकलेंगे तो इंशाल्लाह जिस ऑफिस में आप जाएंगे, मैं अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि जो मैं नहीं सोचा था घर से. मेरे पापा ने मुझे वो शायद कोई शायरी है तो मुझे नहीं पता किसका है, तो मैं कश्मीरी में बोलना चाहूँगी. मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली थी जब मैं घर से निकली थी कि आदमस रंग या तो बे बंगरी लगित जापानस मज नत खस पार गंडल आसमानस मज. तो ये चीज़ मैं पानी ज़िंदगी मज अपनोमुत कि बस सारे बेन बायन ये रिक्वेस्ट करान कि तु अत बट कर गौर कि कत कचा बड़ छे. मे उस पाप अख लेबर, लेकिन आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और सबसे बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ. तो यहाँ पे आशिक साहब की बात करना चाहूँगी. आशिक साहब मुझे जानते हैं, और कमल के ये उनका नाम मुझे नहीं पता है कि मैनेजर साहब मुझे जानते हैं, राशिद साहब मुझे जानते हैं. एवरीबडी इन कश्मीर, जितने भी ऑफिसेज है, जितनी भी एग्जीबिशंस है, जितनी भी फील्ड्स है, एवरीबडी नोज मी. किस चीज़ से मुझे जाना जाता है? मुझे अपने बिजनेस से जाना जाता है. मुझे शाहीना के नाम से नहीं जाना था, मुझे शाहीन क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है. मैं चाहती हूँ कि जितनी भी यूथ अभी आए हैं, मैं भी आपके एज में हूँ, आपके एज में थी, जो आज अभी छोटे बच्चे हैं, तो आप मेरी एज में आएंगे, आपको भी 5-6 साल के बाद पता चलेगा कि बिज़नेस क्या चीज़ है, ये आपको क्या देती है. नो डाउट किसी बच्चे में जॉब करने का टैलेंट है, वो अपनी जॉब को देखेगा. किसी बच्चे को बिज़नेस करने में टैलेंट है, वो अपने बिज़नेस को देखेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी आए हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ करने का वलवला होगा. तो जैसे मुझ में था, मैं एक लेबर की बेटी थी, और माशाअल्लाह आजकल हर कोई बाप अपने बच्चों को एक फैसिलिटी दे रहा है. मुझे पूरा होप है कि आप मुझे देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो काम स्टार्ट किया है, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और आज मेरा ईयरली टर्नओवर है 80 लाख मेरा ईयरली टर्नओवर है, और मेरा बिजनेस प्रॉफिट आता है ईयरली 25 लाख का. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस अपने बिजनेस में, जब भी आप निकलेंगे बिजनेस करने के लिए, ऑफिसर से मिलने के लिए, तो उनसे पहले आप अपने आप में घर में कम से कम 5 दिन 10 दिन
या 1 मंथ दीजिए अपने इस बिज़नेस को जिसको आप करना चाहते हैं। फिर वो आपका कोई लैब हो, आपका अपना बिज़नेस हो, आपका कश्मीरी शॉल हो, जैसे मेरा यूनिट है, तो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो उस बारे में अपने घर से नॉलेज स्टार्ट कीजिए। आज सोशल मीडिया उससे नॉलेज कीजिए, ताकि आप अगर आप हमारे यहाँ पे अभी खादी विलेज बोर्ड की तरफ से मैं आई हूँ, जो मेरा अपना यूनिट है शाहीन क्राफ्ट्स के नाम से, तो मैंने लोन निकाला है 10 लाख का, और मुझे आज बैंक की तरफ से 25 लाख की फैसिलिटी है। तो बैंक ने मुझे बोला था कि अगर आप 1 लाख से अच्छा काम करोगे तो आपको करोड़ मिल जाएगा। इवन कि आज मुझे बहुत सारे बैंक से ऑफर्स आते हैं, HDFC बैंक से आते हैं, JK बैंक से आते हैं, मुझे स्टेट बैंक से लोन है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस वक्त अपने घर में मतलब जैसे पापा की सैलरी पे अपने आप को पालते हैं, कल आप अपने पापा को अपनी सैलरी से बचाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा होप है कि आप सब लोग, जिस तरह मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे देती हूँ कि मैं बाहर जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ। Malik, I completed my MCom from University of Kashmir. Then I qualified UGC, National Eligibility Test through UGC. Afterwards, I decided to start a business. Apart from business, as usual, जो घर में बोलते हैं कि आप जॉब करो, आपने क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, सो MCom यूनिवर्सिटी से किया है, तो then I decided to join college as a college lecturer. उसी टाइम हमने डिसाइड किया साथ में ही कि आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट एज वेल, क्योंकि आपको अब पेरेंट्स को भी खुश करना है और जो है अपनी विश है दैट यू शुड हैव योर ओन बिजनेस so that you can provide employment to the youth as well. तो इस कन्फ्यूजन में मैं 2-5 साल रहा। एक तो मैं कॉलेज लेक्चर भी था और बिजनेस यूनिट भी स्टार्ट किया था इन द नेम ऑफ कैफ़े यूमी, वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। तो 5 साल तक कम्प्लीटली इन कन्फ्यूजन था। एप्लीकेशन पार्ट था दैट्स यू हैव योर ओन बिजनेस, और उसके बाद एकेडमिक्स में एज लेक्चरर काम करता रहा। तो देन फाइनली आई डिसाइडेड टू क्विट जॉब। तो फिर मैंने KVIB को अप्लाई किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इन्होंने मुझे 25 लाख रुपीज़ सपोर्ट किया। तो हमने एक बेकरी यूनिट स्टार्ट किया हंदवारा में इन द नेम ऑफ बेकन केयर। फॉर लास्ट 1 year वी हैव बीन वर्किंग देयर। तो हमने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी की, और उसके बाद जो है जो हमारा बिज़नेस है ये मैन्युफैक्चरिंग का है। हमने इसके जो प्रोडक्ट्स है, ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स हमारी जो है, और मॉडर्न प्रोडक्ट्स भी लाइक बिस्किट्स, ट्रेडिशनल में बागर खानी लाइक कुलचा, वो भी हमने प्रोड्यूस किए। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स है लाइक पेस्ट्रीज़ है, केक्स है, बर्थडे केक्स है, मैरिज केक्स है, वो भी हमने वहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। और जो प्रोडक्ट्स है हमने जो ऑन होल सेल बेसिस सारी डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट हमारा जो एरिया है हंदवारा से जो विलेजेस कनेक्ट होते हैं, तो हमने उन गाँव में वो प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया ऑन होल सेल बेसिस। Aspiring entrepreneurs who intend to sort of become entrepreneurs in future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बड़ी खुशी हो रही है, आई मीन ऐसा क्राउड देख के, ऐसे यंगस्टर्स देख के जो कि एस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, और सोच रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसा मंत्र मिले कि हम भी एक एंटरप्रेन्योर्स बने, हम भी जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स, जो कि इसका पंच लाइन है इस सेमिनार का भी। देखिए, जहाँ तक कि एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, इट्स अ वाइड टर्म, बट आप कहते हैं कि लोग ये जो इनहेरिट होता है किसी में, एंटरप्रेन्योरशिप इनहेरिट होता है, मैं बिलीव करता हूँ इसमें, बट नॉट फुल्ली। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़, एवरी इंडिविजुअल हैज़ एंटरप्रेन्योरशिप विद इन हिम, सबके पास में अंदर होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ टू कम आउट बाय मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ, आई मीन जो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली ये फिजिबल नहीं रहा पिछले 30 साल 40 साल में। बहुत सारे सक्सेसफुल ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके साथ में भी कुछ हालातों की वजह से, कुछ किसी ये इसकी वेदर की कंडीशंस की वजह से, कुछ पैंडमिक की वजह से काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स सफ़र हुए ड्यूरिंग लास्ट 5 to 10 years। में काम करती है। हमने J&K में ऑलमोस्ट
अराउंड 25-30 करोड़ सपोर्ट किया है कश्मीर रीजन में ही। सिर्फ कश्मीर में हमने चाहे वो 2005 का अर्थक्वेक रिलीफ में काम किया, और बारामूला उड़ी में हमने लगभग 10 से 15 करोड़ का सपोर्ट दिया था। उसके बाद 2014 के जो फ्लड्स हुए थे कश्मीर में, वी वर द ओनली इंस्टीट्यूशन विच वाज ऑपरेशनल विद इन 48 आवर्स। इवन गवर्नमेंट डिडंट हैड satellite phones that time, so we provided first 2 phones, satellite phones. So we do a lot of relief, rehabilitation, but उसके अलावा, so coming to the topic, I'll come to the topic straight away, कि जो आज की topic का theme है कि we have to be entrepreneurs, we have to be job creators. So I'll share my experience here. Like, I have been working with youngsters in Kashmir Valley for last, I would say at least 12 years. I have worked with the top, the cream of the business school, that is Kashmir University का business school था, इस्लामिया कॉलेज, यहाँ के जो आपके 3-4 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ काम किया। हमने उस टाइम ये आइडिया उठाया कि हम यहाँ के जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, उनकी एक ट्रेनिंग, उनकी एक मेंटरशिप करेंगे और उनको प्लेटफॉर्म देंगे कि वो खुद अपने बिजनेसेस क्रिएट करें। हम उनको कोई जॉब नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको मेंटरशिप और ट्रेनिंग देंगे। सो लाइक दे वर ट्रेन्ड बाय पीपल लाइक जमशेद गोदरेज, राहुल बजाज, हु आर द टॉप लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। सो उन्होंने पर्सनली कश्मीरी बच्चों को बहुत ट्रेन किया और उनमें से कई बच्चे दे गॉट प्लेस्ड, इवन दो कश्मीर हर टॉप जो बिजनेस एंटिटी होती है कंट्री में, वहाँ पे सिर्फ वो टॉप IIMs या टॉप मैनेजमेंट। Dayanand Sagar University. Live the dream.